A very Good very happy day morning, for all. ma'am. ये आ गई हमारी Good हीरोइन. morning. वाओ, what a Very good dress. morning. Good morning, Dipti. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Vijay So sir, much good morning. freshness. It's amazing. Good Thank morning, you so ma'am. much. And very good morning to everyone. Good morning, Sabka ma'am. very good morning. Priya, Very good good morning. morning. Good morning, ma'am. Very good morning. Good morning, ma'am. Very good morning, Poonam. So yeah, आज सबका favorite chapter है the magic ingredients. So मैंने अपना laptop खोला and I had made myself some chai here. And वैसे देखा magic ingredients तो मैंने immediately अपनी चाय ली. I said thank you so much for healing me. Thank you so much for giving me a perfect health. I love you. Thank you for nourishing my body, making me feel so fresh. So this is what it is about this chapter today. All we have to do is that जो खाओ जो पियो उसमें इतना सारा magic of thank you भर के that health gets better and better every day. And you will see that, you know, like physical, mental, emotional health, उसमें difference immediately आना शुरू हो जाता है. You know, skin blemishes चले जाते हैं. Thank you for my perfect skin. अगर आप ये बोल के कोई भी consume करते हो. So this is one very common practice, I think, क्योंकि हम पूरे दिन ही कुछ खाते पीते रहते हैं. और अगर कुछ खाते नहीं है तो definitely पानी we drink a lot. We should be drinking about 4 liters of water for sure in any case. So अगर 4 लीटर पानी में आप रोज थैंक यू की पावर भर भर के पी रहे हैं तो आप सोचिए कि कैसा हो जाएगा, है ना. तो मैंने आपको बताया था कि इसी करके मेरा चश्मा उतरा था. मेरे चश्मे का नंबर बहुत कम हो गया था, बहुत ही कम, सिर्फ वाटर एफर्मेशन कर करके. एंड यू नो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रैक्टिसेस. अपने घर में जब मैं दिल्ली में होती हूँ तो वहां पे आई एक्चुअली लेबल माय वाटर बॉटल जो मेरी वाली है उसमें कुछ ना कुछ. आई एम अ मनी मैग्नेट. आई एंजॉयड द बेस्ट ऑफ हेल्थ. You know, happiness is my habit now. I'm so happy always. इस तरह का कुछ ना कुछ, you know, affirmation हमेशा रहती है. एक नहीं रहती है, 5-6 रहती है. 5-6 affirmation उस पर लिखी होती है जो हर 3 दिन पे मैं बदलती हूँ. So this is how beautiful this practice is. So हम इसको जितना ज्यादा जो इशू चल रहा है हमारी जिंदगी में वो हम मैजिक इंग्रेडिएंट चैप्टर से रिजॉल्व कर सकते हैं. इट्स सच अ पावरफुल थिंग. और बाकी प्रैक्टिसेस होती है ना, जैसे काउंट माय ब्लेसिंग्स वी आर डूइंग इन द मॉर्निंग, मैजिक रॉक वी आर डूइंग इन द नाइट, और उसके बीच बीच में हमको प्रैक्टिस रहती है. बट ये वाली जो प्रैक्टिस है मैजिक इंग्रेडिएंट, ये पूरे दिन चलती है 24/7 एक्सेप्ट व्हेन वी स्लीपिंग इन द नाइट. इट्स ओनली व्हेन वी स्लीपिंग इन द नाइट दैट हम खा या पी नहीं रहे होते हैं, ठीक है. लेकिन दैट इज द टाइम जब ये अपना मैजिक दिखाती है हमारी बॉडी के अंदर में. क्योंकि हम जितने देर जागे हुए थे, सपोज हम ऑलमोस्ट 16 आवर्स तो हम जागते ही हैं, बाकी के आवर्स हम सोते हैं. तो जो 16 आवर्स हम जागे हुए हैं या 18 आवर्स हम जागे हुए हैं उसमें हम खाते और पीते रहते हैं. तो उसमें अगर इतना सारा ग्रैटिट्यूड पूरे टाइम हर एक बाइट के साथ में थैंक यू हो रहा है, हर खाने में थैंक यू भरा हुआ था, अगर कोई भी चीज, जितनी बार पानी पिया, जितनी बार चाय पी, जितनी बार कॉफी पी, जितनी बार नींबू पानी पिया या जो भी कोकोनट वाटर, सो ये जब पीते हैं तो उसमें इतना सैचुरेट करके थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई फैमिली हार्मनी, या जो भी हमको बोल रहा है वो कर करके, तो आप देखना है कि बहुत जल्दी डिफरेंस आता है. बिकॉज ये लिटरली हमारे पूरे वेकिंग आवर्स की प्रैक्टिस है. जितनी देर जागे उतनी देर मैजिक इंग्रेडिएंट्स होता रहता है. एंड यू कैन टेल एनीथिंग टू द वाटर, यू नो, सब कुछ एब्जॉर्ब 100% हो जाता है पानी में, क्योंकि पानी बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है. तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में साइंटिफिकली, हम इसके बारे में और समझा देंगे बाद में. So yes, Dr. Neha is reading for us today. Good morning, Dipti ma'am. Good morning. आपके हस्बैंड ने पढ़ना था आज एक्चुअली. Yes, ma'am. Actually, he's not available right now, so no, that's why I'm reading. आप privileged that you're reading. So Yes, ma'am. इसमें आप ये देख लेते हैं इमेज में क्या है. सो इमेज में एक सैंडविच रखा हुआ है प्लेट में, और एक बेवरेज है, कोई चाय कॉफी हॉट चॉकलेट कुछ भी हो सकता है. ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है तो पता नहीं लग रहा, बट व्हाट इट मीन्स इज दैट लिक्विड के आसपास खूब सारा, और उसमें स्टरर है पानी में. सो मतलब जो भी बेवरेज है कॉफी उसमें स्टरर है, दैट मीन्स स्टर हमको करना है अपना ग्रैटिट्यूड इसमें. तो जो खूब सारा थैंक यू बोल के इस स्टरर के साथ में उस पानी में या बेवरेज में, चाय में, कॉफी में, हॉट चॉकलेट में, ब्लैक कॉफी में, और सैंडविच जो साथ में है, इन दोनों में इतना थैंक यू भर के फिर उसको कंज्यूम किया जाए. उसकी वजह से वी विल सी दैट लाइफ में बहुत जल्दी शिफ्ट आने लग जाता है. So yes, let's read this chapter.
Hanji, Dr. Neha, please start reading. I'll mute myself. Okay, ma'am. Day 8, the magic ingredient. Just 1 minute. A thankful heart, a quote, a thankful heart had a continual feast. Unquote, W.J. Cameron, 1879 to 1953, journalist and businessman. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And there is a great deal to be grateful for about food. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year around. Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day. And it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel
mining and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. Quote, if there is magic on this planet, it is contained in water. Unquote, Lauren Isley, 1907 to 1977, anthropologist and natural science writer. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. In ancient time, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor that you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode, and
when you don't focus the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you feel far more gratitude. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. During this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into your every drink. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot. Visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in a day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. Magic practice number 8, the magic ingredient. Point number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Point number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Thank you Neha, so for much, reading so Dipti ma'am. beautifully. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yeah, such an important chapter this is. Now, scientifically, पहले हम इसको समझ लेते हैं. मतलब, तो इसमें I have told you previously, but बहुत सारे new members भी हैं जो constantly new add on होते जाते हैं. That हमारी जो human body होती है, वो obviously cells की बनी होती है जिनका लगातार turnover चल रहा होता है. कोई भी सेल एक बार जो बनता है वो परमानेंट नहीं होता. हमारी बॉडी में जो हर एक सेल होता है वो एक लाइफ स्पैन के साथ आता है. सो सपोज किसी का लाइफ स्पैन 20 डेज है, किसी का लाइफ स्पैन सिर्फ 3 डेज होता है. कुछ सेल्स का लाइफ स्पैन होता है 11 महीने, कुछ सेल्स का लाइफ स्पैन होता है 35 डेज. सो इस तरह से कुछ का होता है 120 डेज, कुछ का होता है 6 महीना.
तो अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, अलग अलग पार्ट्स हैं, उन सब के सेल्स का अलग अलग लाइफ स्पैन है, तो वो उतने ही दिन जीते हैं, उसके बाद वो अपने आप शेड हो जाते हैं और वो रिप्लेस होते हैं नए सेल से। तो ऐसे ये चीज पावर बुक में हमने डिटेल में पढ़ी थी कि 11 महीने में हमारी जो बॉडी होती है वो ब्रांड न्यू हो जाती है, मतलब जितने भी सेल्स आ जाएं 11 महीने के बाद हमारे वो सेल्स हमारी बॉडी में नहीं होंगे। इसका मतलब है लगातार न्यू सेल बनते रहते हैं। एक दिन में हम ऑन एन एवरेज 10 मिलियन न्यू सेल्स बनाते हैं और 10 मिलियन पुराने वाले सेल शेड हो जाते हैं। शेड हो जाते हैं मतलब उनको, उसका एक प्रोसेस होता है, वी कॉल इट दे कमिट सुसाइड, एपोप्टोसिस हो जाता है। तो वो अपने आप खत्म, मतलब उनका लाइफ स्पैन हो गया, अब वो खत्म हो गए और नए सेल बन गए। जो नए सेल बनते हैं वो ऑब्वियसली हमारे खाने और पानी से ही बनेंगे, है ना, जो हम खाना खा रहे हैं उसी से तो नए सेल्स बनेंगे बॉडी के। तो इसका मतलब है जो नए सेल्स बनेंगे उनमें क्वांटम एनर्जी होती है, बॉडी के अंदर सारी चीजें ट्रांसमिशन हो रहा होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, तो वो खाना और पानी आप किस एनर्जी में कंज्यूम कर रहे हो, वो इमिजिएटली जाके, बिकॉज वो खाना और पानी जाके आपको हील करेगा, रिपेयर करेगा, आपकी एंटीबॉडीज बनाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, मतलब इम्यून के सेल्स बनाएगा, ब्रेन के सेल्स रिपेयर करेगा, स्किन के सेल बनाएगा, लिवर के सेल बनाएगा। तो इस तरह खाना इसीलिए तो जाता है ना अंदर, ताकि वो कंस्ट्रक्शन करे हमारी बॉडी का, और जहां पे टूट फूट हो रखी है वहां पे रिपेयरिंग का वर्क चले। तो ये जो सारी रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन जो भी चीजें अलग अलग है ना, जैसे रेड ब्लड सेल्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ब्लड में बहुत सारे कॉम्पोजिशंस होते हैं, सो उनमें से उनकी उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि उन सब की एक शेल्फ लाइफ होती है। तो आप सोचो कि आपकी बॉडी में सब कुछ आपके खाने और पानी से बन रहा है, और किस एनर्जी में वो खाना और पानी कंज्यूम हो रहा है, इस हिसाब से सेम एनर्जी फ्लो करेगी हमारी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए लिखा हुआ है रोंडा बर्न ने शुरू शुरू में, दैट आज के जमाने में जब लोग बहुत भागा दौड़ी में जीते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सड़क पे खाते खाते चल रहे होते हैं, या फिर गाड़ी में खाते रहते हैं और उधर देख रहे हैं, हॉन्क कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, उनके लेफ्ट साइड सीट पे खाने का प्लेट या कुछ सैंडविच रखा हुआ होता है, जिसको एक बाइट लेते हैं फिर वो डाल देते हैं, या फिर कुछ पीते हैं चलते चलते बातें करते करते। तो इस तरह रोंडा बर्न ने फर्स्ट पैराग्राफ में ये समझा दिया है कि आज के जमाने में जब हमको बहुत जल्दीबाजी होती है, बहुत सबको जल्दी हो रही होती है, तो जिस तरह से हम खाना खाते हैं, मतलब ग्रैटिट्यूड तो बहुत बात की बात है, उसको जैसे तैसे खाना खाओ, फिनिश करो क्योंकि भूख लग रही है, ये हो जाता है। तो उन्होंने पूरे खाने का कॉन्सेप्ट और हमारी रिलेशनशिप विद फूड ये पूरी तरह से चेंज किया। उन्होंने कहा है कि एक तो खाना जल्दीबाजी में नहीं खाना, बिकॉज अगर आप हरी में खाओगे तो आप और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज आपकी एनर्जी क्या है उस वक्त खाने की, दैट आप हरी में खा रहे हो, दैट आई एम इन अ हरी, आई डोंट हैव टाइम, आई एम इन अ हरी, आई डोंट हैव। अगर इस एनर्जी के साथ अगर हम कुछ कंज्यूम करेंगे तो हमारी जिंदगी वैसी बन जाएगी और हमको किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी ही अंदर इस तरह से जा रही है। जो हमारे सेल्स बन रहे हैं वो हरी एंड वरी की एनर्जी के साथ बन रहे हैं, तो वो हरी एंड वरी को हम अट्रैक्ट करते रहेंगे अपनी जिंदगी में पूरे टाइम, क्योंकि खाने में एनर्जी वही थी। एंड वाटर जो होता है, वाटर के बिना तो कोई खाना बनता नहीं है। अगर हम कोई ड्राई वेजिटेबल भी बनाते हैं पैन में डाल के, तो वो ड्राई वेजिटेबल में भी बिना पानी के नहीं वो नहीं बनती है, या तो वो सब्जी अपना ही पानी छोड़ती है जिससे वो चीज पकती है। जैसे अगर हम कैबेज बना रहे हैं, तो वो कैबेज मटर अगर बना रहे हैं तो कैबेज मटर अपना ही पानी छोड़ेगी जिससे वो पकेगा, या फिर उसमें ऊपर से पानी डाला जाएगा, है ना, उसके बिना तो सब्जी बन ही नहीं सकती है। जैसे कोई भी ड्राई वेजिटेबल भी होती है वो या तो अपने पानी से बनती है जो उसके अंदर ऑलरेडी होता है, या हम ऊपर से डालते हैं। और जो ग्रेवी वाली वेजिटेबल्स होती हैं उनमें तो डेफिनेटली पानी होता है। दालें जो होती हैं उसमें बहुत सारा पानी होता है ऑलरेडी, बिकॉज वो लिक्विड होती है। तो इस तरह से आटा जो गूंथता है, अगर रोटी भी बनाते हैं चपातीज, तो वो ड्राई बनती है बिल्कुल चपातीज, लेकिन उसका जो आटा भी नीड करते हैं जो डो को, तो वो भी हम पानी डाल के करते हैं। So that means water becomes the most important ingredient of the food, and without water you cannot do. You cannot cook the food without water for sure. No matter what it is, every food item needs water, और water 100% energy carry करता है. So it's very important for us to realize that what energy of water are we putting into that food, because the same energy, वो energy destroy नहीं होती cooking के बाद. Suppose अगर आपने कोई dry vegetable भी you're making an aloo matar in a pressure cooker. So when you're making that aloo matar, you're definitely adding water. उसमें टमेटो है, उसमें भी पानी था,
और आपने ऊपर से भी पानी डाला बिकॉज वो सॉसी वेजिटेबल है, ग्रेवी वाली वेजिटेबल है थोड़ी सी. सो दैट water that you're adding into it and the water which is there of the original vegetables which have been added to the inside the pressure cooker, उस पानी की एनर्जी को हमको चेंज करना होता है. और फिर जब कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर अगर आप लोग खुद कुक नहीं करते एंड समवन एल्स इज कुकिंग इन योर हाउस, सो यू कैन नॉट कीप टेलिंग देम ग्रेटिट्यूड डालो ग्रेटिट्यूड डालो. इट्स ओके. अगर आप खुद नहीं बना रहे हो तो वो जो खाना जब फाइनली आपके पास आता है, मतलब जब आप खाने खाने बैठ रहे हो, ठीक है, यू माइट नॉट हैव कुक द फूड, समटाइम्स यू ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट. सो हमको पता नहीं होता है कि हमने किस एनर्जी वाले खाने, जिसने बनाया है हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, ठीक है, तो वो वाली सिकनेस वाली एनर्जी उस खाने में है. तो इसीलिए जब खाना खा रहे हो तो इसमें रौनक ने लिखा हुआ है उस वक्त ब्लेस करके खा लो, उसकी एनर्जी को चेंज कर लो. एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड. ओके, दिस इज अ लॉ ऑफ फिजिक्स ऑल्सो, that energy can never be created nor destroyed, but it can be transformed. So जो negative energy हमारे खाने में है, maybe because the cook was in a hurry, maybe उसको salary नहीं मिली, maybe उसके घर में कोई बीमार है, या जो भी है, या उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, या उस वक्त बातें कर रहे थे जिसमें बॉस के बारे में कुछ बात कर रहे थे नेगेटिव, तो वो सारी एनर्जी उस खाने में होगी जो हमारी टेबल पे रेस्टोरेंट में आया हमारे पास. तो हमारे सामने जब वो खाना आया है तो हम उसकी एनर्जी को पूरी तरह से चेंज कर देंगे उस खाने को खूब सारी ब्लेसिंग देके. Thank you, universe, for giving this such an amazing food to me. Thank you for nourishing my body. Thank you so much to all the farmers who've grown this. Thank you to everyone involved in bringing this to my table. Okay, thank you so much. अब इस तरह से जब आप खाना खाओगे तो it takes normally 10 seconds for the food to change the energy or water to change the energy. So 10 seconds बहुत ही कम होते हैं. कम से कम 10 seconds खाने के पहले उस फूड को ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ ब्लेस करना है. ये चीज उन्होंने बार बार समझाई है इसमें. तो ऐसा लाइक मैजिक डस्ट चैप्टर में रौनक ने लिखा भी है, नेवर थ्रो अवे योर थैंक यूज. Okay, just don't throw away. If you're telling thank you, saying thank you to someone, then you have to look into their eyes and say that thank you so much. So don't throw away the thank yous. अगर रेस्टोरेंट में किसी वेटर ने आपको पानी दिया है and just coming and filling your glass, look at that person and say thank you so much. Okay, so don't throw away the thank yous in the air. Similarly, especially with food and water, never do that. So देख के, ऑब्जर्वर इफेक्ट एक ऑब्जर्वेशन, मतलब इट्स अ साइंटिफिक फिनोमेना दैट जब आप देख के किसी चीज को, किसी पर्सन को या सिचुएशन के लिए थैंक यू बोलते हो, उसको फेस करके, तो उसकी पावर अलग होती है. तो खाने को उन्होंने बोला है दैट सिट डाउन, लुक एट द फूड एंड वाटर. अगर आप पानी भी पी रहे हो तो उस ग्लास में पानी को देखो और फिर थैंक यू बोलो. थैंक यू फॉर हीलिंग एंड नरिशिंग माई बॉडी. And now you see that your body will start getting healed and nourished. Okay, and it will just so happen, अगर आपका जैसे कुछ बोन इशू है, thank you for my super healthy bones. Okay, thank you for my health. So ये बोल के अब आपने पानी कंज्यूम किया, अब thank you for my healthy bones and thank you for my health. अब वो वाली एनर्जी है उस पानी में और या खाने में, अब आपका वो होता जाएगा. तो इसीलिए रौनक ने लिखा हुआ है कि आप सिर्फ ये प्रैक्टिस करके यू कैन बिल्ड अ लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट फूड एंड वाटर. हमारे ब्रेन 85% वाटर में काम करता है. तो किस एनर्जी में आपने पानी पिया या जो भी बेवरेज, अगर आपने चाय भी पी है तो आपने किस एनर्जी के साथ पी है, वो टी का जो वाटर है वो अंदर जाएगा और वो आपके ब्रेन को भी कॉन्स्टिट्यूट करता है. तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, वो भी फायर करते हैं पानी की प्रेजेंस में. पानी और जो मिनरल्स होते हैं उनके साथ में, जो ऑलरेडी पानी में होते हैं, पानी में ऑलरेडी मिनरल्स होते हैं, है ना. सो ये प्रैक्टिस, और ये बहुत पावरफुल है. इसके लिए आप कोई सी भी, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुली रौनक ने लिखा भी है कि मतलब आप अपनी लाइफ को इतनी सुंदर तरीके से बिल्ड कर सकते हो ये वाली प्रैक्टिस कर करके. बिकॉज दिस इज अगेन, इसमें जो एक चीज लिखी है, यू कैन अफोर्ड टू मिस अ सिंगल डे इन बिल्डिंग योर ग्रैटिट्यूड, बिकॉज आपके सपने इस पे डिपेंड करते हैं. आपके सपने डिपेंड करेंगे कि आप कितना ग्रैटिट्यूड देते हो. तो इसीलिए थैंक यू बोलना, और थैंक यू सिर्फ उन लोगों को नहीं बोलना दैट लाइक सिर्फ मतलब खाने को, बट खाने के पीछे जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, है ना, किसान दिन रात खेती करके उस खाने को, मतलब जो भी है, आप सपोज गोभी खा रहे हो या मटर खा रहे हो या टमेटोज खा रहे हो या अनियन खा रहे हो या सैलेड खा रहे हो, क्यूकम्बर,
दिन रात उन्होंने टॉयल और हार्ड वर्क करके उसको उगाया है। फिर उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो उसको पिकर्स होते हैं, फिर उसके बाद वो इसको लेके जाते हैं, फिर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो अपने ट्रक में लॉरीज में उस सामान को भर के ले जाते हैं। फिर उसके बाद खूब सारे होलसेल मार्केट में लोग इन्वॉल्व होते हैं, होलसेल मार्केट से रिटेल मार्केट में आता है, रिटेल मार्केट से हमारे घर में आता है। कई बार खाना पैकेजिंग यूनिट्स में भी जाता है, जैसे ओट्स अगर हम लेते हैं तो हमको कभी भी वो खुले नहीं मिलेंगे, वो हमेशा हमको पैकेज्ड मिलेंगे। कॉर्नफ्लेक्स अगर आप खा रहे हो तो वो हमेशा पैकेज्ड मिलेंगे। ठीक है, तो उस तरह से पैकेजर्स भी बहुत, पैकेजिंग यूनिट में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो उन सारे लोगों के लिए थैंक यू, जिनकी वजह से वो खाना हमारी टेबल पे आया। बहुत सारे लोगों की मेहनत है ना। तो इसीलिए उस थैंक यू को थ्रो अवे, दिल से थैंक यू उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इतनी दिन रात मेहनत करके खाना उनकी वजह से इतनी कंफर्टेबली हमारी प्लेट में आ जाता है। जब कोविड का फेज चल रहा था तब इतने लोग, मतलब पीपल वर मोस्टली इन देयर हाउसेस, बट ये लोग दे कुड नॉट अफोर्ड टू बी इन देयर हाउसेस। पूरी फूड इंडस्ट्री दिन रात चल रही थी, सारे ग्रोसरीज वाले सारे आ रहे थे, ग्रोसरी का स्टॉक पूरा, मतलब पूरा इट वाज गेटिंग वेल स्टॉक्ड, यू नो, थ्रू आउट द कोविड। एक्सट्रीम कोविड में भी आटे की फैक्ट्रियां सब चल रही थी, किसान सारे जाके अपना काम कर रहे थे, वो घर में नहीं बैठे क्या? उनको नहीं अपनी हेल्थ से मतलब था? जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनको भी तो लगता होगा, बट उनका तो काम था, बिकॉज उनको खाना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना जरूरी है। होलसेल मार्केट में जो काम कर रहे थे, जो मेन मंडीज होती हैं जहाँ पे होलसेल का खाना आता है, सब्जियां आती हैं, सीरियल्स आते हैं, सारे वहां पे लोग काम कर रहे थे। भीड़ जितनी अभी उतनी होती, बिकॉज उन सबको तो काम करना ही था। और फिर अपने लाइफ को रिस्क करके वो लोग कर रहे थे, इजंट इट? उस वक्त सबको लग रहा था कि 1-2 महीना घर में रहे, लेकिन इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम, नो। हम आराम से बैठ के घर में अलग अलग चीजें बना रहे थे, हमने बहुत हाथ से मिठाइयाँ बनाई हैं। उस फेज में आई थिंक सबकी culinary स्किल्स बहुत एनहांस हुए हैं, क्योंकि सबने घर में अपने आप से खाना बनाया। लेकिन हम तो बड़ी आराम से बेसन खरीद के लेके आ रहे थे, शुगर खरीद के ला रहे थे, घी खरीद रहे थे। Who was behind all that people, all those people who were working day in and out to get the food on our plate? So I think we owe a big thank you to everyone. जब हम रात को सो रहे होते हैं तो ये ट्रांसपोर्टर्स सड़क पे होते हैं, क्योंकि in India the trucks are not allowed inside the city during the day hours. It's only between 9 to 6 that the truck can ply. So you can imagine that वो बेचारे पूरी रात ट्रक ड्राइविंग करते हैं ताकि खाना हमारे पास पहुंच जाए, है ना। और हम बहुत आराम से सोते हैं और हमें रेडीमेड खाना अपनी टेबल पे मिलता है। इसीलिए अब से हमको बहुत सारा थैंक यू अपने खाने के लिए, दिल से फील करके, बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट। एंड द अदर थिंग इज अबाउट वाटर. Water, of course, like when we built our houses, there was series and set of plumbers digging the underground water tank, making the pipes, taking it up there. So even right now, when I'm staying in this hotel, like इतना ऊंचा होटल है ये, और इतना ऊपर, मेरा बहुत ऊपर का रूम तो नहीं है, लाइक इट्स अ 6th फ्लोर, बट देयर आर सो मेनी फ्लोर्स इन द होटल। ठीक है, हर ऊपर तक पानी किसी ने, और इतने बड़े होटल में इतने लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने ऊपर तक पानी पहुंचाया। वहां से वो टैप में निकलता है, आई जस्ट गो वॉश, कभी ठंडा कभी गर्म, ये वो। ठीक है, पैकेज बॉटल्स है यहाँ पे, कितनी 8 बॉटल्स पड़ी हुई हैं इस किनले की। 8 bottles are kept in the room. So many people must have been involved in packaging of these bottles. Okay. And then people who've come, the housekeeping staff of the hotel, and they know I drink a lot of water. वो मैंने आते ही उनको बता दिया था, because hotel में generally standard में they give only 4 bottles. So I called the housekeeping staff. I said, ये तो मेरी आज रात तक ही खत्म हो जाएगी, आप मुझको, because I checked in the evening. So मैंने कहा I drink extra water. So nice people that they remembered that, और वो कल 8 bottles of water fresh रखे गए हैं, besides 2 that were already there from previous this thing. And it's so just convenient. You open this bottle and you drink it, right? Imagine the people behind, like getting all these and packaging and then loading, unloading from the truck. It's not easy because they all come in big, big cartons, So this is so important to be very, very grateful. एंड देन वाइल कंज्यूमिंग इट, जब वो बॉटल खोलो या घर से आरओ से पानी निकाला या टैप से पानी निकाला पीने के लिए, सो उस वक्त उन सारे लोगों के लिए थैंक यू, जिनकी वजह से पानी हमारे पास आया है। बहुत मेहनत है हमारी जिंदगी, कहते हैं ना, आर इनर एंड आउटर वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन द लेबर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मैन। एल्बर्ट आइंस्टीन इसीलिए बोलते थे कि जब भी कुछ करो तो सोचो इसके पीछे क्या ऑर्डील हुआ है,
कितने लोगों ने क्या क्या किया, इतनी मेहनत जिनके कारण हम आज इतने कंफर्टेबली, अगर अभी होटल, टुडे आई एम कनेक्टेड टू द होटल वाईफाई, yesterday it was not working. So imagine the people who are responsible. There are so many rooms in this hotel, it's huge. ठीक है, हर एक रूम में वाईफाई है, मतलब सोचो कितने लोग इन्वॉल्व हैं, मॉडेम और वो राउटर हर एक रूम में लगाने के लिए एक्सेट्रा. एंड दिस इज हाउ इट इज, लाइक इट इज for everything for that matter. So many people involved in getting our food, water, making amenities for us, and we live such a luxurious life, and still we are sitting and crying, about different things. So kind of इसीलिए कहते हैं ना, grateful heart has a continual feast. आपकी जिंदगी में सेलिब्रेशन की क्यू लग जाएगी अगर हार्ट ग्रेटफुल हो गया तो, और वो हार्ट ही ग्रेटफुल हो गया. अब वो हार्ट अगर यहाँ पर ये टीवी देख रहा है तो वो ग्रेटफुल है, क्योंकि उसी हार्ट के साथ फिर आप खाना खाने जाओगे तो फिर वहां पे ग्रैटिट्यूड ढूंढना है. उसी हार्ट के साथ व्हेन यू आर सिटिंग इन अ कार एंड गोइंग, सो इट्स अ ग्रेटफुल हार्ट. नाउ एवरीथिंग यू आर सीइंग इज विद ग्रैटिट्यूड. Okay, and when the heart becomes grateful, you have a continual feast. Feasting is a sign of celebration. Feasting का मतलब ही होता है हंसी मजाक, खाना पीना, happiness. That's what feasting means. Feasting connotates happiness in our life. If we want happiness in our life, happiness is always deep within. Be cultivated. No one from outside can give happiness. बाहर से कोई हमको खुशी नहीं दे सकता. हाँ, वो सब हमारे एक्स्ट्रा वो होता है, बट खुशी हमेशा अंदर से होती है. ठीक है, अंदर से हम जनरेट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, मतलब हाँ. तो इस तरह जब खाने पानी को आप खुशियों के साथ, ग्रैटिट्यूड एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है. So when you're consuming anything, consume it with so much gratitude and blessing with observer effect. ये स्पेशली बार बार सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर में यही लिखा हुआ था. लुक एट इट, सिट डाउन, savor, eat your food slowly. This is what are the instructions given to us in this chapter. Okay, even if you're eating less, एक जगह बैठ के खाओ, उल्टी सीधी चीजें कंज्यूम मत करो खाना खाने के टाइम. बिल्कुल नेटफ्लिक्स और ये सब देखने की जरूरत नहीं है. न्यूज देखते देखते कई लोगों के ड्राइंग रूम में या डाइनिंग रूम के वहां टीवी लगा होता है, उस टीवी को देख देख के खाना खा रहे होते हैं. उसमें उल्टे पुल्टे सीरियल चल रहे होते हैं जिसमें वियर्ड सी लैंग्वेज होती है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा होता है. सारा आपका खाना 100% एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो सारी इंफॉर्मेशन जो चल रही है. वो न्यूज है कि वो बस गिर गई, वहां ऐसे हो गया, उस मिनिस्टर ने उसको ऐसे कर दिया, ये हो गया, बिकॉज न्यूज वालों को तो टीआरपी चाहिए. सो इट्स ऑब्वियस दैट दे विल मेक अ सेंसेशन आउट ऑफ एवरीथिंग. इवन इफ इट इज अ स्मॉल न्यूज, देयर विल बी अ सेंसेशन आउट ऑफ इट. Okay, different political parties talking about each other, if it is not in a very good way. Okay, all that information is getting consumed by your food and getting absorbed by the food. So we are not like watching that news or whatever it is. अगर आप मूवी भी देख रहे हो और if it is a crime thriller or something, उसकी सारी information आपके खाने में जाएगी और आपकी लाइफ में टेंशन बिल्ड हो जाएगी. So this is the reason why when you consume food, आपको सिर्फ अच्छी बातें करनी है, अच्छी बातें सोचनी है. मन में सेल्फ टॉक अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज मन की बात भी खाना एब्जॉर्ब कर रहा है ना. फूड डजंट नीड द it's the energy that it absorbs. So what energy is going on in your body, in your head at that point of time, that is also getting absorbed by the food. So this food and water, आज की प्रैक्टिस बस यही है कि खाना और पानी, इनको ये आपको प्राण देते हैं, है ना. अगर हमें नहीं मिलेंगे कुछ महीना खाना पानी तो हम जिंदा नहीं रह सकते. पानी के बिना तो शायद 1 महीना भी नहीं रह सकते, और खाने के बिना 10 महीने चल जाता है, लेकिन वो 10वां महीना हॉस्पिटल में होता है. सो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है हमको. सो दिस इज हाउ दीज आर लाइफ सस्टेनिंग थिंग्स, दे आर मेकिंग आवर बॉडी. सो अगर कोई भी ऐसी चीज खाना और पानी है, उसमें खूब सारा थैंक यू हमको भरना है, और फिर अपने हार्ट को परमानेंट थैंकफुल हार्ट से, माय हार्ट इज थैंकफुल. सो उसी हार्ट के साथ दुनिया की सारी चीजें आप करोगे. आप जाओगे, आप सोगे, आप उठोगे, आप अपना चाय पियोगे, आप पानी पियोगे. उसी हार्ट के साथ आप अपने ऑफिस जाओगे, ऑफिस का काम करोगे. उसी हार्ट के साथ आप शॉपिंग करोगे. उसी हार्ट के साथ आप रोड के ऊपर जाओगे. उसी हार्ट के साथ आप ट्रैफिक में फंसोगे. उसी हार्ट के साथ आप अलग अलग सिटीज में जाओगे, ट्रैवल करोगे, हॉलीडेज पे जाओगे. उसी हार्ट के साथ आप अपने दोस्तों से बात करोगे. उसी हार्ट के साथ आप अपने फैमिली मेंबर्स से बात करोगे, अपने पेरेंट्स से, स्पाउसेस से, बच्चों से. सो वो हार्ट ही जब ग्रेटफुल है
तो वो हर चीज को ग्रेटिट्यूड की ही नजर से देखेगा, फिर उसके पास कुछ और है ही नहीं, बिकॉज वो हार्ट ही ग्रेटिट्यूड वाला हार्ट है ना। तो इस हार्ट को ग्रेटिट्यूड वाला बनाने के लिए हम ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, ताकि हमारी जिंदगी, वी लीड द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स। Okay, so first dream and then live the life of the dreams. So this is what this practice is all about. And इसमें एनर्जी चेंज करने की भी बात बताई है कि जो मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर दी है, दैट जो भी एनर्जी हो सकता है जब पैकेजिंग हो रही हो तो उसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी थी उस खाने में, या जो भी है, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, जो पैकेजिंग यूनिट वाले थे उनकी, मतलब उनकी बातों के कारण, उनके माइंडसेट के कारण, हो सकता है वो बहुत गुस्से में उनको काम पे आना पड़ा, तो उस पैकेज में बहुत वैसी वाली एनर्जी होगी। तो इसीलिए कंजम्पशन के पहले उसको प्यूरिफाई कर लो, ठीक है। तो हर एक खाने को जब खाओ तो मेक इट अ प्रसाद. So have prasad out of your food. Prasad is nothing but the energy in it. If we take prasad from a temple or from a gurudwara, right, we take that prasad, वहाँ गुरबानी चल रही होती है, वहाँ सारे लोग सेवादार होते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी एनर्जी होती है ना, मंदिरों की और गुरुद्वारों की, या जहां से भी आप प्रसाद ले रहे हो, वहां की एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है, वहां भगवान जी के गुणगान के प्रेजेस चल रहे होते हैं भजन के फॉर्म में। सो इस तरह से घंटी बजा के लोग मतलब पूजा कर रहे होते हैं, पंडित होते हैं। सो ये मतलब वहां की एनर्जी डिफरेंट होती है, इसीलिए वहां के खाने को हम प्रसाद बोलते हैं। तो प्रसाद आपका पूरा खाना है। अगर आप 2 रोटी, सब्जी, दाल, दही और सैलेड खा रहे हो, वो उसको पूरे ही खाने को प्रसाद बना दो। प्रसाद डजंट मीन दैट सिर्फ इतना सा, ठीक है, पूरे खाने को आप प्रसाद बना दो। और दिन रात आप सिर्फ प्रसाद खा रहे हो, तो जो आपका ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर है, और शाम को अगर कुछ स्नैक खा रहे हो, उसको प्रसाद बना के खाओ। प्रसाद ऐसे ही बनता है, उसकी प्रेजेस करने से बनेगा। आप जैसे ही थैंक यू करोगे और ब्लेस करोगे अपने खाने को, खाना और खाने लाने वाले लोगों को जो ब्लेस करोगे, अपने आप आपकी एनर्जी बॉडी की चेंज हो जाएगी और आपको दिखने लग जाएगा दैट यू विल एंजॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड वॉट एवर यू हैड, you had prayed for. Thank you for, like improving my eyesight. Thank you for my perfect eyesight. Thank you for a good family harmony, all that. You will see that धीरे धीरे वो चीज आपको, you can see the change in your environment because of magic ingredient practice. Okay, so magic ingredient क्या डालना है खाने में? Gratitude. ठीक है, ब्लेसिंग्स डालनी है, ब्लेसिंग्स ऑफ थैंक यू बाय सेइंग थैंक यू। तो ये मैजिक इंग्रेडिएंट है। सब कुछ डाला आपने, इफ यू मेड अ सब्जी से आलू एंड मटर एंड टोमेटो एंड प्याज एंड अनियन एंड जिंजर गार्लिक, जो भी डाला, पानी डाला, मसाले डाले, अब उसमें एक और इंग्रेडिएंट डालना है ग्रैटिट्यूड का, एंड स्पेशली बिफोर कंज्यूमिंग, अगर आप खुद नहीं बना रहे हो तो। सो दिस इज हाउ, like, so in my house I always feel that, like both the ladies who are in the kitchen throughout, they are singing songs, they are laughing, they have fun and a ball, like in the kitchen when they're cooking the food. So this is the reason all of us enjoy a very good health, like there's a lot of laughter in the house and a lot of harmony. I don't remember last when we ever had an argument in the house. We just don't. None of us have arguments in the house. like कभी होता ही नहीं है, बिकॉज इतना खुशी का माहौल रहता है, क्योंकि हमारा तो खाना ही उसमें बनता है। एंड भारती इज अ पर्सन जिसको आपको बोलना पड़ेगा कि प्लीज थोड़ा कम हंसो, मतलब कुशल कॉल्स में आप नहीं सर, कैन यू टेल भारती आंटी टू जस्ट कीप क्वाइट फॉर 5 minutes, इट इज लाइक दैट। सो इस माहौल में जब खाना बनता है ना, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आपकी किचन में हमेशा सुबह सुबह हमारे सारे डोमेस्टिक हेल्पर्स के पास फोन होते हैं। पुट सम नाइस म्यूजिक, और लाइक आप कोई भी, आप हनुमान चालीसा लगा दो उस पे, या शिव स्तोत्रम लगा दो, या कोई भी ऐसी मतलब, or any happy song. Sometimes I just put movie songs there because songs and music and all that, इसके साथ happiness अपने आप आ जाती है। तो मैं उनके उसी के YouTube पे वहीं लगा देती हूँ कि ये वाला सॉन्ग सुनो। कब वो दोनों बांग्ला है, बंगालीज है, तो उनका जो बंगाली सॉन्ग में बोलती हूँ तुम्हारा कौन सा बंगाली सॉन्ग है, देन शील टेल मी एंड आई पुट दैट, especially when I feel that there is some argument going between both of them, because sometimes they fight also. So
that is how we can actually change the energy, especially जब खाना बन रहा है. और अगर खाना बनने वाली एनर्जी आप चेंज नहीं कर सकते तो प्लीज खाने वाली एनर्जी जरूर चेंज कर दो जब आप बैठे हो, और उसको थैंक यू करके, ब्लेस करके, और ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ उसको देख के प्यार से अ ग्रेटफुल हार्ट के साथ थैंक यू, यू नो, सेइंग टू द फूड. So that is what is the like chapter for today. And this is a 24/7 kind of. इसमें it says that जैसे आप thank you बोलते हो, you can see that the energy structure of the food and the water changes, है ना? We have seen that in so many experiments कि उसमें molecular atomic formation ही change हो जाता है food का. The moment you've said thank you to it, there is a different energy structure, and that means you have purified them. Obviously it's going to go inside your body and give you the perfect health. अगर आपको weight loss करना है तो आप खाने को, पानी को बोलते रहिए, thank you for giving me my ideal body weight of so and so pounds, kgs, whatever it is. So do that and enjoy these practices so much. So when we enjoy it, बहुत आराम से किया जाता है ना? So that is what. So आज की practices में सुबह उठते ही जो हम रोज करते हैं, 2 practice हमारी daily practice है. Getting up in the morning, making, so people who are new here, take this gratitude journal, something like this, and write 10 things you are grateful for. Like, I'm so happy and grateful that I have a beautiful life, that I really enjoy. I'm so happy and grateful that I have food on my table every day that keeps me healthy and nourished. I'm so grateful to the beautiful sun, that gives us heat and light and also dries our clothes and gives us food. थैंक यू सो मच. इस तरह से 10 ब्लेसिंग रोज लिखनी है. छोटी छोटी आप मोबाइल के चार्जर के लिए लिख सकते हो, आप इलेक्ट्रिक सॉकेट के लिए लिख सकते हो, आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए लिख सकते हो, आप अपना टूथब्रश के लिए थैंक यू लिख सकते हो, आप अपना गाड़ी में जो पेट्रोल, डीजल, गैस भरवा रहे हो उसके लिए थैंक यू लिख सकते हो. सो इस तरह से देयर आर अम्टीन नंबर ऑफ थिंग्स जो हम यूज करते हैं, बट हमारे दिमाग ही नहीं गया कभी उनको थैंक यू बोलने के लिए. So that is how we have to be very, very grateful. So रोज सुबह we start with 10 blessings, 10 thank you written format, reread them and say thank you, thank you, thank you 3 times. And then आज के दिन observer effect के साथ जो खाना खा रहे हो, जो पानी, कोई भी beverage पी रहे हो, ठीक है, take a moment and look at it. Again, remember 10 seconds, okay? The science has proven that it takes 10 seconds for the structure of food and water to totally change. So we are going to give 10 seconds, and 10 seconds is not asking for too much, okay? According to कितनी मेहनत लोगों ने की है. So take a moment to look at what you're about to eat and drink, और अपने माइंड में या आउट लाउड. अगर आप जोर से थैंक यू बोल सकते हो अपने खाने और पानी को, नथिंग लाइक इट, बिकॉज आवाज की बात अलग होती है अगर आप आवाज से थैंक यू बोलते हो. लेकिन अगर बहुत सारे, जैसे ऑफिस में हो और बहुत सारे लोग हैं, तो आप जोर से नहीं बोल पाओगे, ठीक है? लेकिन अपने माइंड में अच्छे से थैंक यू बोलो, और जो आपको, आप सोचो कि आप उसमें खूब सारी डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो खाने में, ग्रैटिट्यूड डस्ट, ओके? एंड रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, सोने के पहले भी टेक अ स्मॉल पत्थर इन योर फिस्ट, एंड आप पूरे दिन भर की अच्छी अच्छी चीजें सोचो. वाओ, सुबह ये हुआ था सेशन, then after that I did this, then I went to have some fruits, it was so nice, thank you universe for such tasty fruits, and to the hotel where they were served. And then after that the cab wala came in just 3 minutes. It was so easy drive and I enjoyed my drive. And then like yesterday I saw the sunrise from my hotel room, so it is facing east. So the moment the session completed, I just removed the curtains and there the sun was rising. It was such a stunning, like for 2 minutes I was mesmerized. It's such a beautiful sunrise I saw yesterday. And like hotels mein generally hota hai na, pura one side of this thing is totally glass, like it's not cemented, no, that side. So it was looking so beautiful that मैं stupor हो गई थी बिल्कुल. I stood there for a while and I was sad that, oh God, this is so surreal, it was so beautiful. फिर मैंने खूब सारी sun को देख के prayers करी. So it was a very beautiful moment of my day. In fact, that only became the best thing that happened yesterday, क्योंकि हमको ये भी सोचना होता है ना, and what was the best thing that happened yesterday. So it was that beautiful sunrise. So सुबह जब मैं उठी थी तो बिल्कुल ही अंधेरा था. So I'm so excited to look at that beautiful sunrise again.
So और इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब वो क्लाउड की स्ट्रीक्स थी खूब सारी, ब्लैक एंड अलग अलग कलर के क्लाउड्स, और उसके बीच में से दैट सन वाज राइजिंग एंड इट वाज लिटरली लाइक टॉकिंग टू मी, इट वाज लाइक दैट. सो इस तरह से पूरे दिन भर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो पहले हम ऑब्जर्व नहीं करते थे. ठीक है, तो अब हम छोटी छोटी चीजें को ऑब्जर्व करेंगे कि इतनी आराम से लाइक वो कैब वाला, मतलब कैब वाले निकल के मेरा डोर खोलते हैं जो कैब ड्राइवर्स होते हैं, तो मुझे इतना स्वीट लगता है. नॉर्मली कैब ड्राइवर्स डोंट डू दैट, दे जस्ट टेक द पेमेंट एंड देन यू गेट डाउन एंड दे जस्ट राइड ऑफ, लाइक. So, but then most of them have come out of the car, when I was getting out, and I was like, why are they coming out of the car? So this is so much out of respect, which I think the blessings that I give every time I'm paying a cab wala, I give so much of blessing to that money. पहले मैंने ऑनलाइन पेमेंट्स की हुई थी एक्टिव, अब मैंने अपनी ऑनलाइन कार की पेमेंट्स को हटा के आई हैव डन इट जीपे. सो बिकॉज इन लोगों को लगता है कि आप कैश में पैसे दोगे, तो मैंने कहा देना तो है ही है, चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हो या जीपे कर रहे हो उनको, तो why not put it on GPay only? Or GPay, I don't give it to the cab services. I give it to the driver only after the completion of this. And as I mentioned, I always give extra money. So if it is 740, I will always give 800 only. So वो change का भी कोई चक्कर नहीं होता कभी भी. So if it is 620, I will give 700 rupees. It is always like that. So that's why I've become a money magnet. So इस तरह और खूब bless करके देने की opportunity मिलती है ना. So उस तरह से कर करके, so now I see that there is no struggle in taking the cabs, because I'm always like, I'm girl with the wings, I'm always flying and like traveling by cabs, and not just in India, all over the world. It's like that. So cab पे ही dependent होते हैं कहीं पे जाते हैं, and it just becomes so easy for us, isn't it? So इस तरह से पूरे दिन भर में आप छोटी छोटी चीजें ऐसी निकालो, that cab driver got out of the car, when I was getting, he didn't need to. So thank you, and God bless him with the best. इस तरह कर करके पूरे दिन आराम से सोचो, बहुत चीजें याद आती हैं कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने खाना खाया. So since my health is just in that healing phase, so I had a very nice khichdi for lunch. So and one of our students had sent me a biryani because she's been awarded as the best biryani maker. So she sent biryani and salan and Russian salad and a vegetable raita, and khichdi was also ordered. So I literally had a bit of all of that. It was so sweet. So इस तरह रोज हमारे लाइफ में ऐसी छोटी छोटी भी चीज, बट छोटी है ये तो बहुत बड़ा वो था, द गिफ्ट दैट शी गेव. बट या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं या हमको ओवरसी कर लेते हैं. सो द मैजिक रॉक प्रैक्टिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, where you are literally putting a pressure on your brain and thinking of all the beautiful things that happened during the day, even if it was the shade of your lipstick that was making you look good, even it was the color of your skin, that you really, every people complimented that the skin's looking great, or you felt that the skin's looking great today, or how your hair looked, or to the comb that you used, like whatever. So रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस में छोटी छोटी चीजों को याद करो, छोटी चीजों को भी याद करके उसमें से बेस्ट चीज निकालो, उसको थैंक यू बोल के सो जाओ. So that is what these practices are all about. And now we go to the other book, Hero. That's also written by Rhonda Byrne. And almost हम इस चैप्टर के भी एंड पे आ गए, बिकॉज अभी इसके बाद हमको दूसरा चैप्टर शुरू करना होगा. So yes, Dhruvi will be reading for us. Yes, ma'am. Good morning, everyone. Good morning. बड़े टाइम के बाद पढ़ रहे हो ध्रुवी? हाँ मैम. Yeah, please start reading. स्टार्ट करूँ? हाँ बिल्कुल. Paul or Feli. The Chinese have a saying, crisis is opportunity. It's a tourism that every failure contains the seeds of a new opportunity. My dream for the secret film was that it would be released in every country in the world simultaneously. I had convinced myself that the only way to do that would be through multiple television networks across the planet, airing it within a 24-hour period. In the beginning, when the idea of The Secret was first born, international television networks had shown real interest in the project.
However, once the film had been completed, without ever seeing it, one by one the international networks withdrew their interest. We had completed the film. I was $3 billion in debt, and we had no visible way to release our film to the world. Then we heard about a company that had created new technology to stream advertisements on the internet. A new possibilities to release our film had appeared. Our team worked frantically with the company to expand the technology to cater for a full-length film. And the secret was released via live streaming on the internet. The first film to ever be watched in this way. The technology allowed The Secret to be watched across the planet within a 24-hour period, just as I had dreamed. Quote, "It is better to risk starving to death than surrender. If you give up on your dreams, what's left?" Unquote. ध्रुवी एक Jim सेकेंड Carrey. में हाँ आप हाँ जिम कैरी एक्ट सॉरी ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं ये इसको डिकोड कर लेते हैं हम। तो पॉर ऑल्फेरिया जो किनको के ओनर हैं, टाइपराइटर मशीन जो ऑफ कोर्स इनकी कंपनी बाद में फेडेक्स को सेल हो गई थी, इन्होंने बहुत बिलियन में कर दी थी। तो पॉर ऑल्फेरिया ये कह रहे हैं दैट क्राइसिस अपॉर्चुनिटी होती है जब भी आप मुश्किल ग्राउंड्स पे हो, जहां पे टफ सिचुएशन आई हुई है कोई, इसका मतलब है एक न्यू अपॉर्चुनिटी की बिगनिंग आपकी जिंदगी में होने वाली है। हमेशा यही सोचना दैट फेलियर है, इसका मतलब है दैट द सीड ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज सोन। फिर रोंडा बर्न अपनी सीक्रेट मूवी के बारे में बताती हैं जो उन्होंने 2004 में बनाई थी। वो चाहती थी कि वो पूरी दुनिया में इकट्ठे रिलीज हो, इंटरनेशनली मल्टीपल कंट्रीज में इकट्ठे रिलीज हो। अब उसके बाद जब फाइनली ये मूवी बन के आई तो इंटरनेशनल मार्केट ने मना कर दिया इनकी मूवी को रिलीज करने के लिए, पर इनका इंटेंशन बहुत स्ट्रांग था कि शी वांटेड दिस टू रीच टू मिलियंस ऑफ पीपल, ताकि उनकी जिंदगी बदले। इंटेंशन हायर इंटेंशन था ताकि उनकी जिंदगी बदले, ठीक है। ये इंटेंशन नहीं था कि बहुत लोग देख के मुझे प्रेज करें। तो उस इंटेंशन क्योंकि बहुत हाई था, तो उसके कारण एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसमें आया दैट इंटरनेट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में आप एड्स डाल सकते हो। तो इन्होंने अपनी मूवी का एड नहीं, उनको तो पूरी मूवी रिलीज करनी थी, उनके मन में तो यही था। तो अपने आप ये ऑप्शन आया दैट आप पूरी मूवी इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेट के थ्रू लाइव रिलीज कर सकते हो, और इन्होंने की 24 घंटे के अंदर अंदर वो पूरी वर्ल्ड में स्ट्रीम हुई है। और इनकी पहली मतलब वो जो लाइव स्ट्रीमिंग का जो फैसिलिटी आई थी उसमें पहली बार कोई मूवी पूरी दिखाई जा रही थी हर जगह पे, और वो इनकी मूवी थी। इस तरह इनका वो सपना सच हो गया। तो इस तरह से दैट्स व्हाट शी हैड ड्रीम। सो ये जिम कैरी यही बोलते हैं दैट इट इज बेटर टू रिस्क स्टार्विंग टू डेथ देन सरेंडर। मतलब कभी भी गिव अप मत करो। गिव अप कर रहे हो अपनी जिंदगी अपने सपनों पे, दैट मीन्स दैट at least you can not eat the food for multiple days, but don't give up on your dreams, then what's left? So yeah, let's just read it. हाँ जी ध्रुवी पढ़ो। The truth is, while the supreme ordeal might sound scary, you probably won't even realize that's what it is when you face it. When you reach this final challenge, you are well prepared. To come this far means you have already realized the powerful ability within you, and you have everything you need to meet and to triumph over the supreme ordeal. अगर आपकी लाइफ आप इस स्टेज पे आ गए हो कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब है पहले हमेशा सोल्यूशन बनता है, फिर लाइफ में प्रॉब्लम आती है। हमेशा याद रखना, ठीक है। हर चीज का सोल्यूशन ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन वो भरोसा होना बहुत जरूरी है दैट there is a reason why something has happened and there is a beautiful outcome जो इस इशू में है ऑलरेडी बना हुआ। It is just that we need to tap into it. So इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आई है, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत पावरफुल एबिलिटीज हैं आपके अंदर, जिसको हम सुप्रीम ऑर्डिल का नाम देते हैं, उसके ऊपर ट्रायम्फ मतलब विन करने के लिए। ट्रायम्फ करना मतलब विन करना।
अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, पार्ट 4 ऑफ दिस बुक, विच इज ऑल्सो द लास्ट पार्ट, जिसका नाम है विक्ट्री. सो वी ऑल वांट टू study about it. So it is called the victory. That means the rewards that they all got because of this. Hanji. You will have seen the delirious happiness of sports teams winning championship and athletes winning gold medals and breaking world records. Their energy is so potent in sweeps over you. You are filled with exhilaration and even stirred to tear. Yet our feelings in watching them are nothing compared to what the sports person or athlete is feeling in the moment of victory. For it's only after having taken every step of the journey, having persisted through the challenges and overcoming all the obstacles, that you can know what it truly feels like to experience the ultimate reward to the moment of success. Yeah. So Dhruvi, abhi hum itna hi aaj pad payenge. Thank you so much for reading once again for us. Thank you, ma'am. So Dhruvi used to Thank read you a lot so when much. we were only, I think when we were only 20 people, that time Dhruvi would read. Remember Dhruvi? Shuru mein? Ma'am. तेजल Yes, मैं मतलब yes, ma'am, मैं हैंडफुल. रोज पढ़ती थी. हाँ, बहुत पढ़ती थी. तब हम YouTube पे लाइव नहीं जाते थे. So yeah, it हाँ, talks अभी about भी victory. मतलब अभी भी बोलो. फ्रीक्वेंटली आऊंगी मैम, रीड करूंगी ऐसा. हाँ, अब से ऐसा ही करना. Yes. So yeah, so this is about the introduction of the chapter Victory that says that कोई athlete हो, चाहे कोई businessman हो, चाहे कोई भी हो, चाहे उन्होंने कितना भी struggle face किया हो, लेकिन जब ultimate victory आती है और उस phase पे पहुंचते हो ना, तो बड़ा मजा आता है. It is always like a flight taking off, फिर उसके बाद वो take off कर जाती है. So that moment of ease is there जब आप high altitude पे पहुंच जाते हो और flight like उस पे होती है. फिर you are so much in control of life, so much at ease and in the best space of your life, isn't it? I mean, we actually think about now we are all mostly in the best space of our life while the struggles will go on and we have to become better and all that. So, but then yes, this is what we are seeing now. We would be studying about all their moments of success जो इन लोगों की जिंदगी में आए. All that moments of success जो इन 12 लोगों का struggle जो इनकी जिंदगी थी, जो बिल्कुल सड़क पे रहते थे, सीढ़ियों पे सोना, खाने को पैसे नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी ड्रीम्स को और ये सब एक ब्रांड बन गए और ग्लोबल ब्रांड्स बन गए सबकी सब. और मतलब इस लेवल पे इनमें से कुछ लोगों की कंपनीज तो मतलब बिलियंस में इन्होंने सेल की है किसी और को. So it is that beautiful. So yeah, so looking forward to reading their success stories starting tomorrow. So that's all we are going to be studying today. Anyone has anything to add or share as an experience? Or else we close. Ma'am, I think I'll go ahead. Uh-huh. Hi, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. The relationship, another one. So I have two very solid broken relationship in my life, and it used to keep me up previously. And I had written in my top 10 dream list, which I've renewed, but जो पहले बनाया था ना, उसमें लिखा था कि all my relationships are beautifully healed and they are gonna be on a forever maintenance, like they will run smoothly forever, ऐसे लिखा था. But always had that question in my mind कि like this is a how will it come, when will I come to know it's come true. So I had renewed it, so I have done new set of top 10 desires, but kal wo ho gaya, the last one that was broken, and it was the most closest to my heart, and it was not functioning well. So it pushed me. It was actually me who had to go. There were multiple times when universe gave me the signs that I have to talk, I have to initiate,
but I did not take the initiative. I said nahi, universe will do it for me. So I took it the other way. But then yesterday did something really more powerful that propelled me ki I have to reach out and initiate the conversation. And do the conversation, the response was equally at the same intensity, at the same frequency, and at the same vibrational level, even more actually. And I'm just feeling so good this morning. And today morning I did the Ho'oponopono for the whole relationship, because I felt ki I have to do it, and there were literally tears in my eyes that I finally got a chance to do this. So thank you, ma'am, for healing me in and out, because this relationship was somewhere blocking everything that was coming my way in terms of relationships. So thank you for making me realize that. Thank you for giving me the tools. Thank you for changing my life forever. Thank you so much. God Good bless morning, you with everyone. all amazing relationships in your life for sure. Good So morning, ma'am. Sandhya this at side. this age, you're already so diligently into the practices and meditation, and whatever I say, आपको मैं बोलूंगी उल्टा लटक जाओ तो आप वो भी किसी तरह कर Yes. लोगे. Yes, So ma'am. that is something in you which is like really amazing, and thank you for sharing. And Thank you, ma'am. I'm sure that all your relationships, and I mean, you have become so pakka solid that now nothing can put you down ever in your life. So I thank have you. you, ma'am. I have you. Then that's the main strength Even for the me. day, even if I'm not there in this world, you have yourself. So Yeah, yeah, ma'am. so that's Thank how you. it is. So yeah, thank you. So Deepak, Congratulations. while मैंने Deepak को लिखा है. So Deepak, I had partially shared yesterday, but then let me come back to Delhi, and then like tomorrow we'll share it together, because this is also an affirmation that I had written. ठीक है Deepak? So we'll jointly share it tomorrow about the whole process and the victory. I know your hand is raised and I know what you want to share, but we'll do it once, because I had written that 555 practice in the diary also. So I want to read it for everyone. Okay. So yes, Bitty ji. ठीक है दीपक? You're walking outside. सर को बोलने दो ना कुछ मैम. हाँ वो अनम्यूट तो करे. मैं वन मोनोलॉग चल रहा है. दीपक, can you just unmute? So did you hear what I say? What I said? So he's just saying okay. He hasn't ठीक है. unmuted yet. Yeah. He is not Yes. unmuted. Sir, हाँ आपकी वही आवाज ना. सुननी है. हाँ, he will Hello, get sir. started tomorrow. We'll share. Okay, bye bye कर He'll only दिए. share mostly. Yeah, he'll only share mostly. Okay, done. Okay, yeah. Bitty ji. Ma'am, this not sharing, it's a habit. जो आपने आज बोला वो मैं वैसे तो हमेशा ही करती हूँ, पर कल मैंने गाजर का हलवा बना रही थी तो मैंने पूरा कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड किया. मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आज जब बोल रहे थे ना तो मुझे लग रहा था कि सच में मैं इतना दिल से कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल मैं ठीक ट्रैक पे हूँ. कि बिकॉज फिर पहले ग्रोअर्स को, फिर उसके बाद उसको वॉश किया, तो उस पानी को फिर पील किया एंड ग्रेट किया, ग्रेटर को एंड फूड प्रोसेसर को, फिर मिल्क को, फिर उसमें कुकिंग को, फिर कुक टॉप को. तो मतलब इतना मेरा उस समय चल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मतलब हमारी जो हैबिट बन रही है ना, तो आई एम रियली मतलब मैं आप ग्रेटफुल हूँ आपकी भी और खुद की भी कि मैं उसको एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ. तो आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं उस चीज को ले पाई और उसको अपनी लाइफ में डाल पाई. तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. Thank you for being so diligent. आपका नाम ही blessed Bitty है. So Ma'am, blessed तो Sandhya आप had वही. something to share. Sandhya हाँ was जी. trying to share something. Sandhya. अच्छा. हाँ, Sandhya's hand is raised. I can see it on the screen. Yeah, good Yes, morning, Sandhya. ma'am. Good morning. Ma'am, I want to share my Kashmir trip basically. Uh-huh. Earlier also I got chance many times because one of my relative was living there, means before some years. But still, I was always thinking about the expenditure money. Means I know that state is so much costly for me especially. But as I have joined your group, I have heard you about spending money and always think okay, it will be good for me. तो इस बार मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया और मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में डाला था कि मैं कश्मीर ट्रिप पर जाऊं.
and I got a chance because of all the practices I have done. I have written many times. एंड एक अलग चीज क्या हुई मैम कि क्योंकि हमेशा बुकिंग मेरे हस्बैंड करते थे, इस बार जो होटल बुकिंग थी वो मैंने खुद किया। तो आई वॉज नॉट अवेयर, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो बहुत सारी चीजें नहीं भी पता थी। जब बुकिंग कर दी उसके बाद मैंने उसके रिव्यूज पढ़ना शुरू किया है। दो इट वाज 4 स्टार होटल, बट कुछ रिव्यूज में आ रहा था कि बहुत ठंडा है एरिया, तो कुछ रिव्यूज में था कि वहाँ पे हॉट वाटर कभी कभी अवेलेबल नहीं होता, या पैड इतना इलेक्ट्रिक पैड नहीं मिलता, समथिंग लाइक दैट ना। तो करने के बाद और पेमेंट भी मैंने ऐसे कर दी जो नॉन रिफंडेबल थी। नाउ आई वाज स्केयर्ड कि अब ये वापस तो होगी नहीं और हस्बैंड की डांट अलग पड़ेगी अगर हम पहुंच गए। सो आई हैव रिटन इन माई डायरी that my room will be perfect and I will get all the opportunity, all the facilities over there and this and that. वर्बली भी मैं कर रही थी, रिटर्न में भी कर रही थी, एंड अबाउट ट्रिप ऑल्सो, क्योंकि मैं थोड़ी सी ठंड से भी डरती हूँ कि बहुत ठंड होगी तो कैसे चलेगा। मैं वो सब लिख रही थी और सारी प्रैक्टिसेस कर रही थी। एंड इट वाज रियली अमेजिंग मैम कि मुझे होटल रूम, वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज थे, मुझे इतना अच्छा मिला, इतना अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में गई थी 2 ईयर बैक से, मतलब वहां पर जो मुझे मिला था फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटी वही थी। ना ही मुझे रूम का कोई इशू आया, ना कहीं ठंड लग रही है कुछ ऐसा जो उससे मैं डर रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। और एज यू सेड कि मैजिक स्टार्ट हो जाते हैं साथ ही साथ जब हम लिखना शुरू करते हैं। व्हेन आई वाज ऑन द एयरपोर्ट, वहीं से स्टार्ट हुआ। जैसे ही हम लाइन में गए तो बहुत लंबी लाइन थी। हस्बैंड बोले कि अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइनें कैसे करेंगे। अभी हम जाके खड़े हुए तो पीछे से एक बंदा आया, उसने बोला मैम आप लोग ना इधर से आइए और दूसरी साइड चले जाइए। और उसने वो हमें वहां लेकर गया जहाँ एक भी कोई भी नहीं था। हम वी वर द फर्स्ट इन दैट रो बेसिकली। तो बस जाते ही हमारा लगेज वगैरह उन्होंने ले लिया। और इवन कश्मीर में भी, चाहे सोनमर्ग गुलमर्ग, जहाँ जब भी हम गए, एक एक बंदा ऐसे लग रहा था कि जो मैंने अपनी डायरी में लिखा, जो चीजें मैं चाह रही थी, मुझे सब कुछ मिला। इवन अबाउट द फूड ऑल्सो आई वॉज कंसर्न कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिला था। 1 नाइट हम बिना खाने के सोए थे शिलोंग के अंदर, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बट यहाँ पे फूड भी जो हमें चाहिए था, एवरीथिंग वॉज देयर। जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड आई फील, बिकॉज आई हैव रिटन एवरीथिंग इन माई डायरी। और मतलब मुझे नहीं पता था कि मीन्स पॉइंट शेयरिंग का ये है कि आई वॉज नॉट अवेयर कि हम खुद से अपनी लाइफ लिख सकते हैं, बना सकते हैं, और जो हम सोच रहे हैं वो होता है। दैट इज द मेन पॉइंट। ट्रिप होते हैं बहुत सारे, हमेशा किए हैं शादी के बाद, बट ये नहीं मालूम था कि जो हम सोच के खुद से भी हम प्लान कर सकते हैं और वो वैसा ही होगा। टिल द एंड मैम, इट वाज ऑसम, इट वाज ऑसम। आई एम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि कश्मीर मेरा एक सपना था। मैं उसको जी कर आई हूँ। नेक्स्ट मैंने केरला के बारे में लिखा है, whenever I will get chance. Thank you, thanks a lot. So I'm happy that you're constantly planning one after the other. तो हम भी ऐसा ही करते हैं, एक ट्रिप हम करते हैं, फिर हमारी नेक्स्ट ट्रिप का वो शुरू हो जाता है मैनिफेस्टेशन। फिर एक Yes, करते हैं, ma'am. फिर उसके बाद का शुरू हो जाता है। सो ऑलवेज कहते हैं ट्रैवलिंग इज द बेस्ट नॉलेज, इट इज द बेस्ट एजुकेशन. So keep traveling. Mother Earth, planet Earth has given a lot of beauty and abundance everywhere. So savor And it, ma'am, enjoy it, and may you travel more and more. और आपके घर में खूब संपन्नता आए, जिससे आप बहुत ज्यादा लग्जूरियस ट्रैवल्स कर पाए. thank you, So ma'am. And even one more thing, ma'am, कि जो पैसे के लिए भी मैं सोच रही थी, मुझे कहीं से इसी ट्रिप के लिए, फ्लाइट के लिए जितना हम दोनों का था, हस्बैंड वाइफ का, वो मुझे कहीं से पैसा आया, अपने आप आया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मनी फ्रॉम दैट साइड, बट आई गॉट दैट मनी। तो लाइक yeah, जो मैं थोड़ा सा सोच रही थी वो भी बहुत इजी हो गया, स्मूथली हो गया। सो थैंक्स अ लॉट। yeah. Thank you, and God bless you. Thank you so much. Okay, And everyone. ma'am, We will, yeah. yes, Hanji. even for vacation, I always give blessings ki next vacation mera kahan hai. So now I'm going to Goa. Wow. खूब एक दो एंजॉय प्लेस कीजिए, सजेस्ट गोवा कीजिए भी मैम. एट इट्स बेस्ट है. इनफैक्ट अगर आप फरवरी में जाते हो तो वहां पे कार्निवल होता है ना, द गोवा कार्निवल हैपेंस इन द मंथ ऑफ फरवरी. तो उन्हीं डेज में आप जाना, और वो जो मेन पैंजिम वाला जो चर्च है वहां से शुरू होता है, उसके सामने इतना फेस्टिव होता है दैट यू आर गोइंग टू लव इट. और खूब सारे फेस्टिवल्स गोवा में फेब में चल रहे होंगे. सो गो दैट टाइम, यू आर गोइंग टू लव ऑल ऑफ दैट. मैम 24th की टिकट है ऑलरेडी. 24 January. या अच्छा, so that's peak season. You'll enjoy in any case. या वो they had मैम आपने एक lots of. मोजी गांव कहा था, वो तो दैट आई हैव सीन. अभी आपने एक Yeah, नया प्लेस हम बताया आपको था. पूरी आइटिनरी बना के दे सकते हैं. ओके ओके ओके, थैंक It's यू my थैंक यू. it's my second home literally.
Goa is my Yes. second home. I know the मैम streets फरवरी and में पूरे मंथ होता है फेस्टिवल नहीं, या यू हैव टू सम सी, वो डेज? कुछ दिनों के लिए होता है, वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, गोवा कार्निवल इन फरवरी, तो वो सारे आ जाएंगे। फिर गोवा फेस्टिवल्स भी आप देख लीजिएगा, सो गोवा फेस्टिवल्स कौन कौन से हो रहे हैं, सो दैट यू कैन सी एंड देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। बट इवन इफ यू गो विदाउट फेस्टिवल, go with an attitude of festival, you will have festivities there. Goa is fun. The moment you step out of the airport, it is a different vibe altogether. मतलब अपने मैम आप ही उसकी हवा में कुछ है, गोवा की हवा में कुछ है। I've तो been वहां two, पे three फन times, लाफ्टर ही होता है। but not या in February. नो गो एनी टाइम, लाइक अभी तो मार्च तक बहुत बढ़िया सीजन है, बट कभी भी जाओ, इट्स ऑलवेज फन एंड गुड ओनली। Yeah, दिस इज द yeah. रीजन आई गो देयर एवरी ऑल्टरनेट मंथ्स, गोवा कॉल्स अस। इट्स लाइक दैट। Ma'am, there is a question in the comments from Rahi. How to stay positive in any time, every time, the positive frequency. There's a question by who's Rahi. asking that? Ma'am, it's in comment box. Rahi. अच्छा, ओके। सो हाउ टू स्टे पॉजिटिव इज व्हेन यू स्टार्ट योर डे, जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करते हो, सो यू मस्ट बी वेरी न्यू इन द प्रैक्टिसेस, क्योंकि हाउ टू स्टे पॉजिटिव इज समथिंग वी ऑलवेज एक्सप्लेन्ड। सो व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड, और दिन में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आपको इन असाइनमेंट्स की करनी होती है, और रात में यू स्लीपिंग विद द मैजिक रॉक। सो अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे जब आप करना शुरू करोगे, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑब्वियसली ये है दैट आप बिगनर हो, इसीलिए आप पूछ रहे होगे, सो यू डोंट नीड टू वरी। हम जब प्रॉब्लम्स या क्राइसिस में भी आते हैं, मतलब जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है विच इज नॉट एज पर आवर लाइकिंग, तब भी हमको टूल्स दिए हुए होते हैं दैट यू कैन जस्ट कीप राइटिंग थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, एंड गो to the general things like thank you for the air that I breathe and all of that, gratitude में रहना, या अपने मन में जो ऑटो सजेशन है वो उसका ऑपोजिट। स्टेइंग पॉजिटिव मीन्स अ ग्रैटिट्यूड हार्ट, ये डेवलप होता है, इसीलिए रोंडा बर्न ने डे 0 में ऑलरेडी लिख दिया था दैट डू द 28 डे प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंटली, सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छी अच्छी चीजों को पिक करना शुरू कर दे, instead of picking up the negative things from life. And then धीरे धीरे attitude change होने लग जाता है, and your viewpoint and perspective towards life starts changing, and that's what keeps us going, because फिर आपको unfoldings नजर आती हैं यूनिवर्स में। जैसे ही हार्ट चेंज होता है, आपको नजर आएगा दैट आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हो तो अब लाइफ में चेंज हो गया। that becomes the biggest motivating factor for us, so you know that okay, I have to be in gratitude. So just as of now, अगर आप बिगनर हो, just keep doing these practices religiously, and after the 28 day practices, 28 days की practice होती है, उसके बाद आप देखना आप एक नए तरह के इंसान बन जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी होगी। सो इसी तरीके से हमको पॉजिटिव रहना होता है, और ये सोचना कि आपके पास वो सारी पावर है to create your own life. So you are the painter of your life, you are the designer of your life, you are the architect of your life. So please remember that आपके thoughts जो दिमाग में चल रहे हैं वो आपकी जिंदगी बनाते हैं। So just keep doing that, keep thinking the positive thoughts. Initially आपको deliberately करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न है, इसका मतलब है कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो अपने मन में आप वो चीजें लाइए जो आप देखना चाहते हो। जैसे अगर आपकी हेल्थ ब्रेकडाउन चल रहा है, तो आप अपने आप को बोलिए थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू दैट आई एम ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, थैंक यू फॉर माई स्टैमिना, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल आईज, थैंक यू फॉर माई सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, thank you for my kidneys, thank you for my liver, thank you for the blood which is always circulating. So इस तरह कर करके आप इनिशियली डेलिबरेटली करोगे, क्योंकि हो सकता है हेल्थ में चल, बट आप उसका अनफोल्डिंग देखोगे अपनी जिंदगी में, ठीक है। what you will see, you will start believing then, और फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका वैसे भी इसमें प्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड ही तो हम कर रहे हैं, मतलब थॉट पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं ये प्रैक्टिसेस कर करके। तो हम सब क्योंकि बहुत महीनों से कर रहे हैं, तो हमारी बहुत हद तक चेंज हो गई है। अभी भी हमारे लाइफ में ब्रेकडाउन आते हैं, तो हमको पता होता है कि अब क्या करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, मेंटल ग्रूमिंग विच इज गोइंग ऑन विथ ऑल ऑफ अस। सो एंजॉय द जर्नी, जो प्रैक्टिसेस हैं उनको डिलीजेंटली करो, ठीक है। अपने आप आपकी लाइफ बदलने लग जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करो, हम है ना, ठीक है। So And she we wants take to the shine young like you also, ma'am. Her question is, good morning, ma'am. How to stay positive anytime, anywhere, shine young like you, ma'am. She wants to shine like you also. Yeah.
Oh, that's not very difficult, but then you can do the practices that I do. I So wake up sweet. at 4:30, I write gratitude, I do Ho'oponopono meditation, I do breathing meditation, then session, then जो session में practices है वो हम करते हैं, और जब भी break down होता है उसके लिए thank you. तो जैसे हमने कल बताया था, मेरा बहुत few lakh rupees got stolen. Even then I was blessing that person who took the money, okay, धोखे से. सो इस तरह से उस तरह का हार्ट जब आप डेवलप कर लोगे वो बहुत आराम से हो जाएगा अगर डिलिजेंटली आप ये बुक्स दोनों प्रैक्टिस करोगे. एंड व्हेन द इंटरनल ब्यूटी, दैट इज द हार्ट ऑफ ब्यूटी, कम्स, देन नेचुरली द एक्सटर्नल ब्यूटी हैपेंस, है ना. सो if you want this kind of a life, it is not very difficult. It is just that अपने आप पे मेहनत करनी जरूरी है ताकि बाहर मेहनत नहीं करनी पड़े. It is like that. And as far as looking young or whatever is concerned, that is a byproduct of gratitude. It will happen in any case. इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता. I don't do facials, or I don't, but I gym very hard, for my whole body and all that little, things that you need to do. I'm very mindful of what I'm eating and drinking. I could have had a lot of biryani and salan yesterday, but I stuck on to having just one small katori of khichdi. So these little things you need to do. Take care. जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो आपको मन करता है अपनी जिंदगी में हर एक चीज ऐसी करने का जो आप पसंद करते हो. ठीक है? You start respecting your life and your health, and keep doing that. And बहुत जल्दी, मतलब रोज क्या क्या हम करते हैं ये बताते ही है ना. जैसे आज भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया दैट हमारे किचन में कुछ ऐसे शिव स्तोत्रम कुछ ना कुछ चल रहा होता है, सिर्फ इसलिए कि खाने में वो एनर्जी जाए. तो जो हमारे घर में प्रैक्टिस होती है वो हम आपको सारा शेयर करते हैं. लाइक द चिल्ड्रन आल्सो थ्राइविंग इन दिस लाइट, ऑल्दो दे डोंट अटेंड द सेशन. Kushal and Shiv are my two sons. So one lives in Delhi, one doesn't live in Delhi. He lives outside because he's gone there to study. So the elder one's working and he's in Delhi. So even the children are thriving in this light. So all your family members, are going to shine in your light. So that is the light we kind of generate with gratitude and love. So this is how it is. So my husband also started coming into the practices only of late, like about 3-4 months ago. Till then, it takes time for men to start believing in something which is, not concrete, because उन लोग का बहुत analytical mind होता है और बहुत ज़्यादा वैसा reason and logic हर चीज़ में चाहिए होता है. But yeah, when men come, they become more sincere than us in these practices, like उनको हर चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाती है. So that is how it is. And so wish you the best of life. And बहुत जल्दी आप हमसे भी ज्यादा शाइन करोगे, ऐसा नहीं है. ये सब प्रैक्टिस करके ही हुआ है. So yeah, thank मैम you so जस्ट much. वन थिंग, हाँ जस्ट एक बात जो मैंने कल सुनी थी वो मैं बोलना चाहती हूँ. माई थ्रोट इज नॉट दैट ग्रेट, बट या मैंने कल सुना था एंड फ्रॉम अ वेरी एमिनेंट पर्सन दैट रोंडा बर्न ने जब ये बुक लिखी थी, millions of copies were sold throughout the world. Even in India, there were so many buyers. In our sessions also, we are 142 participants right now. But that particular thing, उन्होंने बोला था ना कि सभी के सभी, मतलब she has given us all the tools to rise up and to become a millionaire. But if we are not there right now, अभी तक अगर हम लोग वहां पहुंच नहीं पाए हैं, that means we are not doing the practices diligently. We all have got those tools, ma'am. मैम जिस तरह से कर रही हैं, अगर मैम की तरह हम लोग चाहते हैं बनना, वैसी पर्सनालिटी चाहना, and the shine that she has always, the gratitude that she has built upon herself, so we have to do these practices very diligently. That's what that person said. अभी अचानक से आपने बोला तो मुझे वही याद आया, क्योंकि वो ये सारे टूल सबके पास है, लेकिन होता उसके साथ है सब कुछ जो कि बहुत ही diligently इन practices को करता है ना मैम. तो ये मुझे Yeah, बताना thank था, you so वेरी much. इंपॉर्टेंट. मुझे Yes. एकदम स्ट्रक कर गई ये बात ना, उन्होंने जैसे बोली तो मैंने कहा या बिल्कुल सही बात है. या थैंक यू मैम. Practices करना बहुत जरूरी है. So that's very, that is what cultivates that heart, and it is cultivation, like it's not something we are born with. We make that because human mind बहुत moldable होता है. उसको gratitude के mold में डाल के उसको shape कर दो, जिंदगी sorted है. And that's how it is, and it's easy.
ठीक है, चलो, we'll get going. It's a work day for all of us. Thank you so much, and thank you, Ma'am, Priya, really for wishes adding we your did my Thank anniversary. you, Thank you so much, Dipti. ma'am, for the Thank you so beautiful much, Let's ma'am. see session. you tomorrow. So Sure, much. thank you. Lots of love to all. Thank you. Thank Bye-bye. Thank Bye. you. Have a day full of fun. Bye-bye. Love.